इसी का दोबारा छुपा दो। हाँ जी बेटे, द टॉपिक्स वी हैव डन, एक टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो आपने फिजिक्स में कर लिया ये टॉपिक। केमिस्ट्री में किया, मैंने कराया, स्कूल में कर लिया आपने। सिग्निफिकेंट नंबर्स में, क्योंकि ऐसा टॉपिक को बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं था, आपको समझ आ गया? कोई डाउट्स है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? पक्का? Then you have a rounding off. सेकेंड टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। ये भी आपने स्कूल में किया होगा। Then you have laws of chemical combinations. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज का हमारा टारगेट है। आज हमें ये लॉ करने हैं। फोर्थ टॉपिक बेटा आपके पास है मोल कॉन्सेप्ट। फिफ्थ इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Sixth topic we have is stoichiometric calculations and limiting reagent. And last topic आपके पास था concentration terms। यानी अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में आपके पास ये सारे टॉपिक्स थे जिनमें से हमने सिर्फ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं कर रखा, बाकी सारा टॉपिक कर लिया था। ठीक है जी। आप में से एक स्टूडेंट ने आज ही ज्वाइन किया है शायद, क्योंकि आपने पहले बीच में एब्सेंट थे बहुत दिन। तो बेटा आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रखी है, आप रिकॉर्डिंग्स अपलोड करवा के उनको देख लेते हैं एक बार। कोई डाउट हुआ तो पूछिए। अब हमें आज स्टार्ट करना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज के टॉपिक के बाद आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस टोटली डन हो जाएगा, उसके डाउट्स ले लोगे, देन द ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स। ठीक है। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हाँ जी बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो रूल इज, मान लेते हैं कि आपने 10.8 2.395 इनको प्लस करना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो नेचुरली आपके पास आएगा 5 9 1 3 and 1। ये आ जाएगा। ये मैथमेटिकल एडिशन है। इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इस टर्म में हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट में हमारे पास है 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले वाले में 1 डेसिमल प्लेस है, सेकेंड में 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो आंसर मस्ट बी कोटेड और मेंशन्ड इन 1 डेसिमल प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आपको आंसर को 13.1 यानी 1 डेसिमल तक रखना है। तो आप इसे राउंड ऑफ करोगे, यू विल से इट इज 5, ये बन जाएगा 02। 5 को राउंड ऑफ किया, उससे पहले क्या है, एक ऑड नंबर है, add 1 to the previous digit, तो 9 plus 1 is 10,
फिर 1 आ गया, ये 2 बन गया। आप 0 को राउंड ऑफ किया तो आंसर शुड बी 13.2। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हाँ जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मार्क करना है। जैसे इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो नेचुरली 1 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर होना चाहिए। तो आपने इस नंबर को सिंगल डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते जाना है। तो आपने पहले 5 को राउंड ऑफ किया, 5 राउंड ऑफ करेंगे तो 9 + 1 is 10, 20 हो जाएगा। फिर 0 राउंड ऑफ करके 2 ही बचेगा, तो आंसर इज 13.2। इज इट क्लियर? कैसे करना है सीधी राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं बेटे, अगर आपके पास बेटे राउंडिंग ऑफ के लिए मान लो आपके पास है 13.33456085, आपको लेट सपोज यहां तक रखना है, तो 5 को राउंड ऑफ करो तो उससे पहले वाला डिजिट मान लो ये 7 है, तो 5 को अगर हटाना हो तो उससे पहले अगर ऑड है तो उसमें +1 करते हैं, तो ये बन जाएगा 13.33456088। 8 को राउंड ऑफ किया क्योंकि 8 5 से बड़ा है, तो 0 में +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 13.334561। 1 5 से छोटा है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 6 5 से बड़ा है तो ऐड 1 आ जाएगा 13.3346। 6 5 से बड़ा है, ऐड 1 13.335। 5 आगे ऑड है 13.34 इज योर आंसर। अगर 5 को राउंड ऑफ करना हो तो उससे पहले अगर ऑड है तो उसमें 1 प्लस करना है, इवन है तो कुछ नहीं करना। अगर 5 से बड़ा, अगर 5 से जो बड़ा है उसको जब भी राउंड ऑफ करेंगे, जैसे इस 8 को राउंड ऑफ किया तो ऐड 1, तब भी ऐड 1, और अगर छोटा है तो बस इग्नोर। ठीक है, उसी को इग्नोर मारना है। हाँ, वो नंबर एक तुम। हाँ जी, मुझे समझ आ गया यहाँ तक? राउंडिंग ऑफ क्लियर है सबको? एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ओके? क्या कराऊं? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन? 10 + 2.395। अगर ये आ रहा है आपके पास तो 10 में कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है, 10 इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, तो ये वैल्यू आपकी यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर इट एज सच। आप अगर 10.0 लेते हो तब तो बात है, अगर 10 नंबर है तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आपने एग्जैक्ट 10 लिया है तो इट इज गोइंग टू बी 12.395, ये बन जाएगा। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस इसके माने गए 3, तो आंसर 3 में ही कोड हो जाएगा। हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ जी, आपने फर्स्ट बेंच आपने कुछ पूछा था, आपने कुछ कहा था? नथिंग? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन डिजिट, ये पूछे। जैसे मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो 1 2 3 4 5। अगर 12.0325 होता तो 1 2 3 4 5 6। अगर ये बन जाता 12.00 या फिर 0.0012 या फिर 0.000012। रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जो भी जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो ये वाला जीरो भी इंपॉर्टेंट है, गिनना पड़ा। जीरोस आफ्टर अ नंबर इज सिग्निफिकेंट, इसलिए यहां पे हो गए आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां हो गए 6 4। अब जीरोस बिफोर अ नंबर
आर इनसिग्निफिकेंट, इनका कोई मतलब नहीं है। तो आप कहोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? सिर्फ 2। अब zeros बिफोर नंबर अगेन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, इसमें 4, 4, 5, 5, 4, 4, 3। क्या हुआ? अगर 10 किसी नंबर, 10 मान लो पेन है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब किसी चीज के साथ कोई एग्जैक्ट नंबर लिखते हैं, एनी थिंग इज मेंशन्ड विद अ नंबर, तो आप उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हो इनफाइनाइट। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि लेट्स सपोज ये वैल्यू, अब डेसिमल आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रह गए? 5। डेसिमल हटा दे और ये वैसे एक नंबर दे दिया जाए, तो यू कैन से 1.0 इंटू 10⁴ भी तो कह सकते हो, कह सकते हो 1.0 इंटू 10⁴ तो यही बन जाएगा। तो आप कहोगे इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1.00 10⁴, तब भी यही आता। इसको आप 1.000 10⁴ लिखते तब भी तो यही आता। और अगर आप इसे 10.0 इंटू 10⁻³ लिखते तो भी यही आता। तो जब कोई ऐसा नंबर दे दिया जाता है तो आप कहते हो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स वेरी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 3, कुछ भी। तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स का सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट और 10 के मल्टीपल्स का सिग्निफिकेंट इट्स अ वेरिएबल, ठीक है। जब आपने मुझे कहा 10 प्लस समथिंग, इसका मतलब ये कोई चीज नहीं है, ये कोई नंबर है जिसमें ये फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो नेचुरल है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि डेसिमल नहीं था, मैंने कहा इसके सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं इनफाइनाइट। इसमें जब इसको प्लस कर दोगे तो आपको मिनिमम इसके नंबर लेने पड़ेंगे डेसिमल बेसिस। क्लियर हुआ? हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ आ गया? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तो योर आंसर मस्ट बी कोटेड इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 20.0 इंटू 3.2, मान लो ये क्वेश्चन, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने, डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने। ये कितना आ जाएगा? 64, मान लो आप डेसिमल हटा दो 10, तो 64 640.0 by 10, तो आपको मिल रहा था 64। लेकिन आपको आंसर इस तरह से कोट नहीं करना था। योर आंसर शुड नॉट बी 64, योर आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि इसमें तो 4 बन रहे हैं। तो आप कहोगे इट शुड बी 6.4 और ये 2 जीरोस खत्म हो जाने चाहिए, इंटू 10⁻1। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे ताकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम पे आ जाए, जिसमें सबसे कम है उसके जितने, और 10⁻ मल्टीपल बन जाए तो बन जाए, कोई बात नहीं।
तो अब आपका आंसर बन गया 6.4 10 raised to power 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.64 10 raised to power 2। अभी भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी, एनी डाउट? याद आ गया सबको? कोई और डाउट तो नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? The laws of chemical combination. The first law we have is law of conservation of mass. Law of conservation of mass given by Lavoisier, father of modern chemistry. बेटे इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. आप कहते हो इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट मीन्स मास रिमेन्स कंजर्व्ड। During chemical reactions. Total mass of reactants is always equal to total mass of products. For example, जब आप लिखते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 प्लस 32 it is equal to 44. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल मास हमेशा इक्वल रहता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हो, तो balancing of chemical reactions is based on this principle. Balancing of chemical reactions is based on law of conservation of mass. Clear? After this, we have a second law. And the second law is law of conservation of energy.
इसमें हम कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड। दैट मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। तो आपने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब आप कहते हो एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है कि अगर आप किसी रिएक्शन में लेट अस सपोज 393.5 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होती देख रहे हो, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ोगे तो यू हैव टू गिव 393.5 kilojoules, only then you will get carbon and oxygen। तो किसी रिएक्शन के फॉरवर्ड प्रोसेस की वैल्यू उसके रिवर्स की वैल्यू के बिल्कुल ऑपोजिट, साइन चेंज हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड जाने में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो बैकवर्ड आने में रिक्वायर्ड हो जाएगी। And this is conservation of energy. This is based on conservation of energy. अब एनर्जी क्या कर सकती है? बट आप कह सकते हो एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। जैसे लाइट एनर्जी है तो वो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, हीट है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन सकती है, इलेक्ट्रिकल है तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन सकती है। तो एनर्जी अपनी फॉर्म्स बदल सकती है बट एनर्जी खत्म कभी नहीं होती। ठीक है, एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड लॉ आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and energy। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग मास एंड एनर्जी आर conserved and ये आप कह सकते हो ना तो मास डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना एनर्जी, बट आर इंटर कन्वर्टिबल। तो ये लोग आपको कहते हैं कि मास एंड एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड है और सिर्फ इतना फर्क है कि दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास। फॉर्मूला फॉर दिस इज E is equal to delta mc square। इसका मतलब अगर m मास डेल्टा m मास कहीं खत्म होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। आप ये कह सकते हो डेल्टा m इंटू 3 इंटू 10 raised to power 8 का स्क्वायर। अब ये जो चेंज इन मास है किस पे लेना पड़ेगा? किलोग्राम्स पे, और ये किस पे आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो आपका जो एनर्जी का यूनिट सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी जूल्स। तो इट मीन्स आप सोच सकते हो कि अगर जरा सा भी मास डिस्ट्रॉय हो जाए, जरा सा भी मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू 0.001 किलोग्राम, इवन देन सोच के देखो अगर 0.001 किलोग्राम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, तो हमें तो लग रहा है कि मास कितना है, बहुत ही थोड़ा मास है। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0.001 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 8 का स्क्वायर।
It means 1 into 10 raised to power minus 3, 3 into 3 into 10 raised to power 16. It will be 9 into 10 raised to power plus 13 joules. और आप कह सकते हो 9 into 10 raised to power 10 kilojoules. Now you can imagine if अगर सिर्फ 1 ग्राम मास डिस्ट्रॉय हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस कितनी सारी है. Huge amount of energy is produced. ठीक है. This is the reason आप कहते हो during nuclear reaction reactions mass is converted to energy. यानी आप जब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हो या एटम बॉम्ब की बात करते हो तो एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब इनमें आपके पास ये इक्वेशन वैलिड है. तो आप समझ सकते हो केमिकल रिएक्शंस में इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में E इज इक्वल टू mc² नहीं लगा सकते. सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा हो सकता है. दिस इज द रीजन जब हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार एटम बम फेंका गया तो एक एटम बम पूरे के पूरे 2 शहरों को 2 बॉम्ब्स और 2 शहर पूरे के पूरे तबाह हो गए थे. यानी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी कि उस पूरी सिटी को बचा पाना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. ठीक है. जो हमारे वैसे ही एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स होते हैं जो वैसे नॉर्मल रूटीन में बॉम्ब शेलिंग होती है, बॉम्ब फेंक दिया, उसमें तो एक रेंज में आधा पौना किलोमीटर में थोड़ी बहुत यहाँ सिर्फ जहां बॉम्ब गिरा उसके 2-4 घर इधर 2-4 घर उधर उड़ जाते हैं. उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही होती. लेकिन जब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए जाते हैं तो वहां पे प्रोसेस इतना छोटा सा नहीं रह जाता. द होल सिटी विल बी जस्ट एक्सप्लोडेड इन 1 सेकेंड. यानी एक एटम बम पूरा दिल्ली या पूरा मुंबई एक दिन में एक झटके में खत्म कर सकता है. दिस इज द रीजन कि हमें आपस में जब वॉर्स होती हैं, जब टॉक्स होती हैं कंट्रीज की, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरफ न चला जाए. न्यूक्लियर बॉम्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड लाइक दैट. जब क्या कहते हैं न्यूक्लियर जो ये रिएक्शन करते हैं, जब मतलब टेस्ट करते हैं, तब क्यों नहीं होता पूरा राजस्थान में जब होती है तब. न्यूक्लियर टेस्टिंग के टाइम पे आप बहुत कम क्वांटिटी में काम करते हो ना. टेस्टिंग इज जस्ट जैसे मानो आप टेस्ट करना हो किसी चीज को तो एक चम्मच से टेस्ट करते हो ना, पूरा जग पी के तो ना टेस्ट करते हो. तो टेस्टिंग में तो आप बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जब आपने अब काम ही करना है फिर तो आप पूरे लेवल पे एक्सप्लोर करोगे. टेस्टिंग इज अ वेरी स्मॉल सैंपल व्हिच इज मतलब एग्जीक्यूटेड एज टू हैव द सेम एक्सप्लोजन. ठीक है. समझ आ गया. पूरा राजस्थान नहीं उड़ा सकते, पूरी स्टेट है हमारी. ओके. So this is about third law, that is law of conservation of mass and energy. इस इक्वेशन का नाम आपने सुना होगा. इट इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फॉर्मूला. नहीं सुना. तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन E is equal to delta mc². Fourth law is law of constant composition. Next law we have is law of constant composition or definite proportion. Law of constant composition or law of definite proportion. Now, according to this law, in a compound, elements are found to combine
in a fixed proportion of weight, irrespective of the source of that compound. अब आपका ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो बाय वेट वो फिक्स रहती है. एग्जाम्पल, अगर आप वाटर की बात करो तो वाटर रेन से आ रहा हो या फिर रेस्पिरेशन से आ रहा हो या फिर ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट से आ रहा हो या फिर कंबशन ऑफ फ्यूल से बदला हो, तो वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है. पानी तो इन सब में बनता है. रेन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन द रेन पार्टिकल. रेस्पिरेशन में जब हम सांस लेते हैं तो अगेन कंबशन होती है, फूड जला और सांस बाहर फेंकी तो मॉइस्चर इज गोइंग टू बी आउट. ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स ने ट्रांसपायर किया, उनके प्लांट्स के पौधों के पत्तों से पानी निकल रहा है. कंबशन ऑफ मीथेन, आपको भी पता है कि मीथेन जब जलेगी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलेगा. अब वो कह रहे हैं वाटर कहीं से भी मिले, रेशियो क्या रहेगी? 2:16, यानी 1:8 हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वेट रेशियो. तो ये लोग कहते हैं कि पानी का सोर्स चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी आप बनाओ उसे, मेथड कोई भी रहा हो, वो कंपाउंड अगर वाटर है तो उसमें रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 1:8. ठीक है. सेम वे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के भी कई सोर्स है हमारे पास. इट कैन बी कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. It can be carbon plus oxygen gives carbon dioxide. It can be combustion of methane. Breathe out जब हम करते हैं तो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे रिएक्शंस में एक सैंपल प्रोडक्ट था. फॉर एग्जांपल, आपको ये भी पता होगा कि जब हम सोडियम बेकिंग सोडा को पानी डालते हैं और गर्म करते हैं, हमें पता है कि उससे भी क्या बनता था? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब CO2 चाहे किसी भी सोर्स से आ रहा हो, रिएक्शन क्या भी हो, हार्डली मैटर्स. Carbon to oxygen ratio is fixed, 12:32, 3:8. That is called law of constant composition or definite proportion. समझ आता है? अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस है. Isomers and isotopes. These are the two limitations of this law. अगर आप कहते हो ethanol and dimethyl ether, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं,
और दोनों के सोर्सेज सेम नहीं हो सकते। नेचुरल कंपाउंड ही अलग है, एक एल्कोहल है और एक ईथर है, लेकिन कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन 24 रेशियो 6 रेशियो 60। किसी लाइन 12 3 8 और यहां पे भी क्या आ जाएगा? इसका मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड्स की रेशियो भी सेम हो सकती है। हमने कहा था इन अ गिवन कंपाउंड रेशियो इज फिक्स्ड रेशियो, तो यहां तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स है, रेशियो इज फिक्स्ड रेशियो, तो ये आपके पास लिमिटेशन हो जाएगी। यानी यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइसोमर्स। और आइसोमर्स में रेशियो सेम बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। हमारा दावा कह रहा था कि अगर रेशियो सेम है तो कंपाउंड भी सेम होगा। एंड सेकेंड लिमिटेशन इज if it is water with oxygen 16 and water with oxygen 18, तो यहां पे हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2 रेशियो 16, यहां पे 2 रेशियो 18, तो वाटर ये फॉर्मूला सेम है लेकिन स्टिल उनकी रेशियो डिफरेंट आ रही है। तो आप कहोगे जब आइसोटॉप्स आ जाएंगे तो सेम कंपाउंड बट टू डिफरेंट रेशियोज विल बी देयर। ठीक है जी, समझ आया? तो ये दो लिमिटेशंस हमारे पास नजर आ रही है। यानी जब आइसोमर्स डिस्कवर हुए और आइसोटॉप्स की डिस्कशन हुई, इन दैट केस हमारे लॉ की डेफिनेशन एक क्वेश्चनेबल डेफिनेशन बन गई। There is your law of constant composition and its limitations. ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट लॉ वी हैव इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पे हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? The next law is law of multiple proportion or law of multiple proportion of elements, यानी different compounds and ratios। इस law के according अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही कंपाउंड बनेगा। There can be more than one compound. If there is possibility of more than one compound, जैसे वाटर भी बन गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन गया। जैसे आप कहोगे दो एलिमेंट्स और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन सोचना पड़ेगा। ऐसे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस लॉ को समझने का मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स को ध्यान से देखो। यहां हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 32। अब हाइड्रोजन को फिक्स करना है। अब हाइड्रोजन को बना दो 1।
अगर 2 के साथ 16 कंबाइन करते हैं तो 1 के साथ 8, फिर इसको 1 बनाया 16, फिर आप कहोगे ये जो एलिमेंट ऑक्सीजन है इट इज कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट इज गोइंग टू बेयर अ सिंपल नेचुरल नंबर रेशियो। यहाँ पे क्या किया, जो रेशियो आ रही है पहले वो लिखा, फिर किसी एक को फिक्स करके दूसरे को कैलकुलेट किया, और फिर रेशियो ऑफ दैट सेकेंड एलिमेंट इज गोइंग टू बी ए सिंपल रेशियो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32। अब आपने कार्बन को फिक्स कर दिया 1, नेचुरल अगर इसको 1 कर दोगे तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 16/12, ये 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 32/12। अब रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितनी हुई 1:2। तो आपको किसी एक को फिक्स करना है और फिर ये रेशियो निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि आपको मैं करके जैसे दिखा रही हूँ वो तो बहुत आसान लग रहा है, आपको लग रहा होगा इतना आसान सा क्वेश्चन है इसमें क्या है, लेकिन बेटा वहां पे क्वेश्चन इतने आसान फॉर्म में नहीं आएंगे, वहां पे क्वेश्चंस फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ आएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4 and N2O5। अब हमने इतने सारे कंपाउंड्स लिख लिए, ठीक है। जब आपने इतने सारे कंपाउंड्स लिख लिए तो आप कहोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, कोई भी ले सकते हो, मान लो आपने नाइट्रोजन को फिक्स किया, एंड देन ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद दैट, और फिर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने कहा 14 कंबाइंड विद 60, 14 कंबाइंड विद 32, 28 कंबाइंड विद 16, 28 कंबाइंड विद 48, 28 with 64, 28 with 80। ठीक है जी। तो कैन यू प्रूव दैट कि ऑक्सीजन की रेशियो सिंपल रेशियो आ रही है? कर पाओगे? जल्दी से करो, मैं आपको रिमाइंड कर दूं। Fixed weight of nitrogen, you have fixed the weight of nitrogen as 14. ये आगे एक तो नाइट्रोजन को फिक्स करो, बन गया, ऑक्सीजन निकालो, जैसे यहाँ कर रहे हो।
हाँ जी, should we start with the practice? करें? हाँ जी, नाइट्रोजन को 1 कर लिया। ये बन जाएगा 16/14, 32/14, 16/28, 48/28, 64/28 and 80/28. रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन आप इसको कर सकते हो 32/28 रेशियो लेनी है ना, तो 32 into 2/28। आप क्योंकि रेशियो लेने के लिए मैंने सबके बेस कॉमन कर दिए। इज इट क्लियर? तो नेचुरल 28, 28, 28, 28 सब कैंसिल हो गया। What is the answer? 16 2s are 32, 16 4s are 64, 16 1s are 16. इन सारे कैंसिल भी हो गए, नहीं समझ आया। मैथमेटिक्स आप ले रहे हो 32 रेशियो 28। अच्छा 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 समझ गया। रेशियो तो ये रेशियो सिंपल आ गई। तो आप कह रहे हो कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल बन गया। डन। अब आपने क्वेश्चन लिखना है क्योंकि एग्जैक्ट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो सिर्फ समझने के लिए। क्वेश्चन विल बी इन सम नंबर टर्म्स। तो राइट डाउन एक ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर लॉ का कर लो सो दैट आपको समझ आए। लिखो 0.7 ग्राम ऑफ आयरन, 0.7 ग्राम ऑफ आयरन combines with 0.4 gram of sulfur to form iron sulfide. .8 gram of iron, 2.8 gram of iron dissolve in HCl, precipitates out 4.4 gram, precipitates out 4.4 gram FeS on treatment with sodium sulfite. सल्फाइड का फॉर्मूला Fe2SO4 ना? FeS. नहीं Sodium sulfide is Na2S. आयरन सल्फाइड का FeS. Prove that law of constant proportion is verified. Prove that law of constant proportion is verified. अब बेटा आपके पास आयरन सल्फाइड बनाने के लिए वो 2 मेथड्स दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है एक Fe+S we get FeS, और एक आपसे वो कह रहे हैं कि Na2S plus आयरन and HCl we get FeS plus NaCl
या आप कह सकते हो प्लस FeS प्लस NaCl प्लस हाइड्रोजन। अब ये FeS बने या ये FeS बने, दो अलग सोर्सेस से दो अलग रिएक्शंस होके FeS बन गए। अब इस क्वेश्चन में आपके पास आयरन सल्फाइड की अलग इंफॉर्मेशन है और इसमें कुछ अलग। इसमें वो कह रहे हैं कि ये तो 2.8 ग्राम है आयरन, dissolved in HCl, precipitated out 4.4, ये 4.4 ग्राम है और 0.4 ग्राम सल्फर 0.7 ग्राम आयरन से कंबाइन कर रहा है। आप बताओ क्या इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आयरन और सल्फर की रेशियो नजर आ रही है? 7:4। अब इस कंपाउंड में बताओ क्या आपको आयरन और सल्फर की रेशियो मिल जाएगी? आयरन कितना है? 2.8 ग्राम। सल्फर कितना हो जाएगा? 4.4 माइनस 2.8। इट मीन्स 2.8 रेशियो, दूसरी वैल्यू क्या आ गई? 4.4 4.4 माइनस 2.8 1.6। आप 28 रेशियो 16 7 एंड 4, तो आप कहोगे रेशियो दोनों में सेम आ रही है, तो इसका दोनों कंपाउंड भी क्या हो गए? सेम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। समझ आया जी? गॉट इट? समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन। An element forms two oxides. An element forms two oxides containing 50% and 40% of element. 50% and 40% of element. Show that these results illustrates law of multiple proportion. Show that these results illustrates law of multiple proportion. इसको करते कैसे, मतलब अगर वापस जाना हो बैक करने के बाद? बस ट्राई कर दे। क्या करूं? रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ से हाँ जी बेटा, कर पा रहे हो? हो गया? आपका क्वेश्चन था कोई एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड आपने बनाया, लेट अस सपोज MXY, हमें नहीं पता इसकी वैलेंसी क्या है, सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि मेटल और ऑक्सीजन या एलिमेंट और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, एक ऑक्साइड 1 बन रहा है और एक कोई ऑक्साइड 2 बन रहा है।
इसमें मेटल और ऑक्सीजन 50-50% है। इसमें मेटल और ऑक्सीजन कितना है? 40% ऑफ एलिमेंट। ये 40% है तो ये फिर 60% होगा। नेचुरल अगर 50-50 है तो इसको 1 बना दे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1। इसको 1 बना दूं तो ये आ जाएगा 60/40 यानी 6/4। 6/4 is 3/2। अब ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेशियो 1:3/2, दैट मीन्स 2:3। और ये एक सिंपल रेशियो आ रही है, इट मीन्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपके पास थे फर्स्ट 5 लॉज। Now 6th law, there is law of reciprocal proportion. Next law we have is law of reciprocal proportion or equivalent proportion. Law of reciprocal proportion or equivalent proportion. इस लॉ के अकॉर्डिंग देयर आर 3 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद ईच अदर। ये लॉ 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 यानी 3 एलिमेंट्स एट लीस्ट। अगर कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहां लेट अस सपोज मीथेन एंड हियर वी हैव वाटर। तो लॉ इज अबाउट द 3 डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे आपने यहां लिख दिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेट अस सपोज NO2, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, तो दिस लॉ इज नॉट अबाउट 2 एलिमेंट्स, इट्स अबाउट 3 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद ईच अदर इन डिफरेंट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। यहाँ लेट सपोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ H2S। इस लॉ के अकॉर्डिंग कार्बन दोनों से कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एज वेल एज इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, राइट? And hydrogen is combining with oxygen. Clear? अब इसमें अगर आपके पास ये 12:32 है तो ये 12:4 होगा। If I make it 1, this will become 32/12. This will become 4/12. तो अब अगर कार्बन को फिक्स कर देते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वेट चेंज हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन? इट विल बी 4/12, रेशियो 32/12, 12 and 12 cancel, 1:8. And hydrogen to oxygen, independently this ratio is 2:16, 1:8. इस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों रेशियोज या तो सेम होंगी
या फिर सिंपल होल नंबर मल्टीपल होंगे। These two ratios are same or simple whole number multiple. For example, पहले क्वेश्चन में वो सेम आ रही थी। Now again, अमोनिया कंबाइन विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों कंबाइन करके बन रहे थे और एक तरफ हमने वाटर रख लिया। यह आ गया 14:3, 14:32, 1 3/14, 1 32/14। अब फिर से हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आपने यहाँ से भी निकाल दिया और 1:8 तो यहाँ आ ही रहा था। चेक करना है ये रेशियो क्या सेम आती। यहां मुझे जो रेशियो चाहिए मुझे इधर से भी वही रेशियो निकालनी है। कितना है बेटा? 3:14, 32:14, 3:32। अब आपके पास 3/32 रेशियो 1/8, इट कम्स आउट टू बी 3/8। अब ये दोनों रेशियोज क्या आ रही? सेम और सम मल्टीपल। होल नंबर मल्टीपल। फिर से आप इन दोनों को ले लेते हैं। और H2S, H रेशियो S यहां से निकालना है तो मुझे यहां से भी H और S से निकालना है। जब H और S निकालना है तो ऑक्सीजन को फिक्स करूंगी मैं। ठीक है, 2:64, नहीं सॉरी 32, 2:32 एंड मुझे दूसरा क्या चाहिए? सल्फर, 32:32। अब हमें फिक्स करना है ऑक्सीजन 1, it will become 2/32, 1 and 1। अब आपको चाहिए H रेशियो S, 1/16 रेशियो 1, 1/16 और यहाँ आ रहा है 2:32, इट इज 1/16। ये दोनों रेशियो सेम आ गए। जो इस कंपाउंड में रखा है, जिसको आपने अकेले रखा है, उसमें जो रेशियो है वो इस कंपाउंड के उन दो एलिमेंट्स की रेशियो के साथ या तो सेम आ रही है या फिर फुल नंबर मल्टीपल आ रही है। ठीक है, समझ आ गया? 3 examples I have given you. देखो, according to this law, the ratio between the different weights, the ratio between the different weights of the two elements, different weights, the ratio between the different weights of the two elements, different weights of the two elements which combine separately with a fixed weight of third element fixed weight of a third element is either same or
simple whole number multiple, either same or simple whole number multiple of the ratio in which they combine themselves वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल of simple whole number multiple of the ratio in which they combine themselves. Right? ये आपके पास लॉ था. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, रेगुलर न्यूमेरिकल. कॉपर सल्फाइड CuS, कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला है CuS, contains 66.5% copper, 66.5% copper, and copper oxide contain 79.9% copper, 79.9% copper, and SO3 contains 40% sulfur. SO3 contains 40% sulfur. Show that data illustrate law of reciprocal proportion. पहले आप ट्राइंगल बना लो और सोच लो कि ट्राइंगल में कौन कौन है, कैसे कैसे कंबाइन किया. आपने रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वेरीफाई करना है. मेक अ ट्राइंगल फर्स्ट. आज आपके स्कूल वर्किंग है? आज आपके स्कूल वर्किंग था? छुट्टी थी? अच्छा, +2 आई है, +1 भी छुट्टी है. तो आप सुबह से हमारी क्लासेस ही लगा रहे हो? कितने बजे से बैठे हो? अच्छा, नॉन मेडिकल 11 बजे से और मेडिकल 9 बजे से. मेडिकल वालों की हालत कैसी? मेडिकल वाले हाथ खड़ा करो सर. ये तो ठीक ठाक है, फुल ऑफ एनर्जी नहीं है कभी. चलो, थक तो नहीं गया ना ज्यादा? ज्यादा थकने के चांसेस मेडिकल वालों के हैं ना, नॉन मेडिकल तो ठीक ठाक बैठे. वैसे हालत ऐसी लग रही है नॉन मेडिकल ज्यादा थक गया है, मेडिकल फिर भी फ्रेश है. ऐसा तो नहीं है? ठीक. हाँ, तो टेबल जो बनाना था, मैंने ट्राइंगल शो करना था, तो मैंने कॉपर सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ आपके पास CuS गिवन है, यहाँ CuO, और here we have SO3. अब आपने वेरीफाई करना है कि रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज इक्वल टू, या सेम है या होल नंबर मल्टीपल है विद SO3. करो. सेम आ रही है कि होल नंबर मल्टीपल आ रही है? सेम मल्टीपल.
COS, CO and SO3. COS में कॉपर की परसेंटेज गिवन है और सल्फर की आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी कॉपर की परसेंटेज गिवन है और सल्फर कैलकुलेट कर सकते थे। ऑक्सीजन बेटा पहले पार्ट में आपके पास है कॉपर 66.5, ये आ जाएगा 33.5। दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वैल्यू आपके पास थी 79.9, तो ऑक्सीजन आपके पास आ गया 20.1। अगर इसको आपने 1 लिख लिया होता तो ये 33.5 डिवाइडेड बाय 66.5 होता, और ये 1 आपने सिर्फ कॉपर फिक्स कर दिया था 20.1 79.9। ठीक है जी। क्लियर है? ये 1/2 के आसपास आ रहा है, ये 1:0.5 आ जाएगा और ये 1:0.25 आ रहा है। और यहाँ आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन कितना गिवन था? 40% सल्फर, ये हो गया 40, तो ये हो गया 60, 4:6, 2:3। अब सल्फर एंड ऑक्सीजन की रेशियो, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन comes out to be 2:1। तो बेटा 2:1 एंड 2:3 इनको आपने कंपेयर करना था। तो बेसिकली आप सल्फर रेशियो ऑक्सीजन 2:1 और 2:3 की आपस में रेशियो लेना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3:1 आंसर। सिंपल रेशियो आ गया। ठीक है जी। यस बेटा। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, आप माइक से दूर बैठे हो बेटा। हाँ जी। मॉलिक्यूलर मास से कैसे? नंबर ऑफ मोल्स बना लिए थे। कॉपर 63.5, कैसे? ये 63.5 है, ये 32 है। अच्छा, आपने डायरेक्टली कॉपर को 63.5 ही ले लिया। जो आपने किया वो ठीक था, वो अंडरस्टूड है, वो सेम ही आएगा क्योंकि वो तो बनी फॉर्मूला वैसे रहा है। वो आपसे कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताओ कि लॉ वेरीफाई हो रहा है, वरना आपका तो कोई भी फॉर्मूला गलत है ही नहीं, आपने तो वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। इसलिए आप अगर एटॉमिक मास ऑफ कॉपर से निकालोगे तो फिर तो आपको पता ही है कि वैलेंसी से बना है, तो आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। तो आपको इस वैल्यू के बेसिस पे सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि आप इसमें इस लॉ में हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट 2 से ज्यादा वैलेंसी शो करता है या 2 से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर मल्टीपल होती है या होल नंबर वैल्यूज होती है। जब आप अगर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से क्वेश्चन करोगे तो उसका मतलब यही होगा कि आपने तो पहले ही मान लिया वैलेंसी सिंपल है, तो वो वैसे नहीं करना, ठीक है? हाँ जी, और कोई डाउट? हाँ जी, नाउ नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac's law of combining volumes. किस नंबर पे पहुंच गए आप? 8th। Gay-Lussac's law of combining volumes. Gay-Lussac's law of combining volumes, इस लॉ का अगर एग्जाम्पल बताऊं तो इनका कहना है कि whenever gases combine with each other to give a product,
hydrogen gas combined with oxygen gas to form water in a gaseous form. Or nitrogen plus 3 hydrogen gives 2 ammonia. Again, all these are in gaseous form. तो अगर ऐसा है तो 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give us 2 volume of water. A ratio of volume is always a simple ratio. Same way, 1 volume combined with 3 volumes to give us 2 volumes. Ratio आ जाएगी 1:3:2. तो उनका कहना है कि गैसेस जब भी कंबाइन करती हैं to give us reactant or product formed again gaseous, they always do so in terms of simple whole number ratio of their volumes. That is called Gill-Lussac's law of combining volumes. अब दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए? Basically हम ये कह रहे हैं कि 1 mole is having a fixed volume of 22.4 liters, 3 moles are having 3 into 22.4 liter, तो रेशियो क्या आएगी? 1:3 तो आएगी. That is Gill-Lussac's law. लिखो जी, write down. According to this law, under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, when gases combine together, to give gaseous product, they do so in terms of volumes and bear a simple ratio of volumes and bear a simple ratio of volumes. Right? Example आप पहले लिख चुके हो. For example, the question: 6 liter hydrogen and 5.6 liter chlorine. 6 liter hydrogen and 5.6 liter chlorine are exploded in some container. What is the composition by volume? What is the composition by volume of the resulting mixture? If everything is conducted under similar conditions of temperature and pressure. Resulting mixture. इसके बाद मैंने क्या बोला? अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपसे पूछेंगे कि हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो बताओ क्या हुआ होगा? मिक्सचर एंड में क्या बचा होगा? क्या बन गया होगा? व्हाट हैपेंड?
ये क्वेश्चन कुछ हद तक लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट से होगा। आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि आपने ये 5.6 लीटर्स लिया हाइड्रोजन, यू हैव टेकन 5.6 लीटर हाइड्रोजन, सॉरी क्लोरीन, ये 6 लीटर हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर क्लोरीन। नेचुरल बेटा आपके पास अगर ये 1 वॉल्यूम है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 वॉल्यूम, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था, ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या बन गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब 1 वॉल्यूम से ये कितना बनता है, 2 वॉल्यूम, तो 5.6 से ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स 5.6, 11.2 लीटर्स, क्योंकि प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब 6 लीटर में से 5.6 लीटर रिएक्ट कर गया, 0.4 लीटर हाइड्रोजन बच जाएगा कि नहीं, क्या कह रहे हो, 5.6 1 रिएक्ट विद 1, तो डेफिनेटली 5.6 रिएक्ट विद 5.6, 0.4 तो बचा ही हुआ है। तो अब जो मिक्सचर बचा उसमें 0.4 लीटर क्या बचा होगा, हाइड्रोजन, और 11.2 लीटर्स क्या बच गया है, HCl। तो आप कहोगे फाइनल जो मिक्सचर है उसमें आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पड़ी हुई है और HCl पड़ा हुआ है, क्लोरीन पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ये लिमिटिंग एजेंट पूरा खत्म हो जाता है ना? तो आपका आंसर बन गया हाइड्रोजन 0.4 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ HCl इज फॉर्म्ड। हाँ जी बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये आपके पास था गay-Lussac's लॉ, यानी 8th लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? क्लियर है सब तक? थक गए अब तो, मुझे आपकी शक्लों में तो दिख रहा है, क्या हंस रहे हो आप लोग, मैडम आप 2 लॉ और मत दिखा देना बस, है ना? चलो अब हमारा 2-3 लॉ रह गए, यानी कल नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर पैक कर देंगे, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? मंडे टाइमिंग्स, एक मिनट बेटे, मैं वीनू मैम का नंबर देती हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? वीनू मैम का नंबर है आपके पास? बच्चे पूछ रहे टाइमिंग्स के लिए, बेटे 1 मिनट वेट करो। आप सबके पास वीनू मैम का नंबर है बेटा? हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब हो सारे, ऑल ऑफ यू? जो नहीं है उसको ऐड कर देना, या ऐड करवा देना, एडमिन कौन है ग्रुप का? वीनू मैम है, मैथ्स वाले मैम दीपा मैम है, ओके। तो आपने क्या करना है बेटे, ग्रुप पे डाल देंगे टाइमिंग्स क्या रहेंगे। मॉर्निंग 8:30 सुटेबल, 8 o'clock इज फाइन, आप मॉर्निंग 8 o'clock आ सकते हो। एट 20 तक आ सकते हो। स्कूल कितने बजे लगता है आपका?
8:30 पे लगता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी प्रॉब्लम, जैसे क्योंकि फर्स्ट क्लास मुझे दी जाएगी, मैं मोस्ट प्रॉब्लम, तो आप एक बार के लिए मैम से कंफर्म ग्रुप पे डाल देना कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। तो अगर फर्स्ट क्लास हुई केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, तो नॉन मेडिकल पहले फ्री हो जाया करेगा, और उसके बाद फिर बायो वर्सेस मैथ्स जो भी। आपका सेकेंड रूम बिल्कुल वर्केबल है? सिर्फ एक ही रूम पे इस टाइम पे एक्टिव है जो स्टूडियो ठीक से काम कर रहा है? चलो ठीक है बेटा, आपको फिर ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाल देंगे, टाइम टेबल। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।